Hello students, in this video we are going to discuss about the economic importance of bacteria and fungi. Bacteria and fungi play a very significant role in our daily lives. The transformation of milk into yogurt or curd, the digestion of food in our intestine, the fermentation of dough to prepare idli and dosa, to prepare alcohol and vinegar, to prepare antibiotic like penicillin, streptomycin, and there are lot many other uses. Besides that, there are certain bacteria which are harmful also. They cause disease in plants, animals. They spoil the food and sometimes they used as bioweapons. So in this unit, we are going to discuss the different uses and misuses of bacteria and fungi. Now, Sir Alexander Fleming antibiotic. What are antibiotic? Anti means opposite. Biotic means living organism. The thing which is used against a living organism. Chemical derived from the microorganisms like bacteria and fungi to kill disease causing microorganism are known as antibiotic. The first antibiotic was penicillin. Now, the discovery of penicillin was a story. Sir Alexander Fleming was not working on any of the antibiotic. He was working on one of the culture medium, and he found that the culture medium, he took some of the pallets, like 4-5 pallets, and out of that, in one of the pallet culture medium was not growing. मतलब वहाँ बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था. Then he found and he tried to find out the things why the bacteria is not able to grow. He found that in this pallet certain fungi are present. So he concluded that in presence of fungi bacteria cannot grow. And from here he got the idea, if I could extract that chemical from the fungi, I can work against a disease caused by bacteria. I can stop the growth of bacteria in living organism. If I am talking about agriculture uses of bacteria, bacteria acts as a nature scavengers. Nature scavengers means bacteria प्रकृति के सफाई कर्ता के जैसे काम करते हैं. Bacteria present in soil act upon dead food and bodies of plants and animals. They convert complex food into simpler ones. If suppose someone is dead, then our body is made up of protein. This protein will convert into phosphates, sulfates. If someone is died, then the bones will decompose, and from these bones we can produce carbonates and phosphates. So we can conclude that during this process, bacteria can convert complex food into simpler ones, so they reduce the waste on the earth. Nitrogen fixation. There are certain bacteria which are able to fix atmospheric nitrogen, and they provide this atmospheric nitrogen to the plants. Plant can prepare protein from it. Now there are two kind of bacteria which can fix atmospheric nitrogen. One is free living bacteria which live in the atmosphere, which live in the soil, and they can fix atmospheric nitrogen directly. But there are symbiotic bacteria. Look in the diagram. In this diagram you can notice that symbiotic bacteria are present in root nodules of leguminous plants. Now root nodules क्या हैं? रूट के अंदर कुछ स्वेलिंग है जिनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. लेग्यूमिनस प्लांट क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट आर द प्लांट्स ऑफ पल्सेस. जो यहाँ पर दालें होती हैं या बीन्स, मटर, that is known as leguminous plant. So there are certain bacteria which are present in the root nodules of leguminous plant. They have a symbiotic relationship, means they will fix atmospheric nitrogen for them, and the bacteria will got the space for that. So there are two kind of bacteria which can fix atmospheric nitrogen and can provide this nitrogen to plants. There are
a very important role of bacteria in nitrogen cycle. Now, what is nitrogen cycle? Look in this diagram. In air, nitrogen and oxygen is present. In presence of thunder and lightning, बहुत कड़ाके की बारिश और बिजली कड़क रही हो, तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज NO बनाता है. Now this NO combine with oxygen and form NO2, nitrogen dioxide. Now this nitrogen dioxide combine with oxygen and water and produce nitric acid. Now nitric acid convert into soluble nitrates. This soluble nitrate is assimilated by plants and plant produce food from it, that is protein. This protein is consumed either by the plant or by the animal. Now, if the plant is eating or the animal is eating, in both of the cases they will produce waste product after the digestion, or in both of the cases when they will die, that waste or that dead body will mix into the soil. Inside the soil there are certain bacteria which can decompose this complex body into simpler ones. Like denitrifying bacteria can convert these can release nitrogen from these complex compounds, and this nitrogen again mix within atmosphere, combine with oxygen and form nitrous oxide. Or there are some bacteria known as ammonifying bacteria. This ammonifying bacteria convert it into ammonia. From the ammonia, nitrosifying bacteria acts and form nitrites. And when nitrites is formed, with the help of nitrifying bacteria, nitrates are formed. So कहने का मतलब ये है कि plant can fix atmospheric nitrogen directly. Look in the arrow which is in the center, that leguminous plant can fix atmospheric nitrogen directly. Otherwise they are able to absorb nitrogen in the form of nitrates. तो या तो नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट बनेगा या तो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा. प्लांट कैन एब्जॉर्ब दिस नाइट्रेट and can produce protein. This question is very, very, very important. Please do practice of this nitrogen cycle. Now, if I am talking about industrial uses of bacteria, the first one is retting of fiber. What we are doing in retting of fiber? Suppose we are supposed to take out the fiber from jute, hemp, and banana leaves, or from the flax. Okay, what we are supposed to do? We can take these stem and we can submerge this stem in a water. पानी में भिगो देते हैं and add some of the bacteria. This bacteria act upon the xylem and phloem, or you can say it act upon middle lamella. Now what is middle lamella? Middle lamella is the layer between xylem and phloem. And with this act on this xylem and phloem, ये क्या करते हैं? उन फाइबर को अलग कर देते हैं. Last year I visited Agra and I saw a sari which was made from banana pulp or banana fiber से बनी है. तो what they have done? They took the banana stem. We know that in banana we have pseudostem. They submerge the stem in water. पानी में डाल देते हैं, बैक्टीरिया डालते हैं. बैक्टीरिया जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो लेयर है मिडल लेमिना, उस पर काम करती है. उससे क्या होता है कि उनके फाइबर्स लूज होने शुरू हो जाते हैं. देन वी एक्सट्रैक्ट दीज फाइबर्स एंड फ्रॉम दीज फाइबर्स वी प्रिपेयर द फैब्रिक और टेक्सटाइल एंड देन वी विल सेल इट इन टू द मार्केट. Now, curing of cheese, tobacco and tea. There are many of the bacteria which are responsible for the fermentation in certain chemical compound. Like curing of cheese. Cheese के अंदर जो एक specific flavor है, that is because of the fermentation by bacteria. Tobacco के अंदर जो specific flavor है या smell है, that is also because of fermentation. Or it could be a putrefaction. Now, what is putrefaction? There are three terms. One is decay. Decay means the complete breakdown of complex food in presence of air. क्योंकि complete breakdown है, क्योंकि in presence of air है, it produce a lot of amount. It does not produce any smell and produce some energy also. While in case of putrefaction, bacterial decomposition of organic matter occurs in limited air. कम एयर में होता है, इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती है.
And fermentation already we have done, it is a kind of a anaerobic respiration. There are certain bacteria which helps in the formation of vinegar from the alcohol, that is Acetobacter aceti. It helps in the formation of vinegar from alcohol. Similarly, we can prepare curd from the Lactobacillus bacteria, and this Lactobacillus bacteria helps in the formation of curd from milk, or you can say it helps in storing of milk. Medicinal uses of bacteria already we have done. We can produce certain antibiotics from the bacteria like streptomycin. We are derived from the bacteria, and this streptomycin, chloromycetin are used against certain diseases like pneumonia, typhoid, or diphtheria. There are certain bacteria which are used to synthesize vitamin B, that is E. coli bacteria. This E. coli bacteria helps in the synthesis of vitamin B, and this vitamin B is used for different पर्पसेस. इसलिए जब पेट में कभी कीड़े हो जाते हैं या मुंह में छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर जनरली हमको विटामिन बी देता है बिकॉज ऑफ विटामिन डी बी डेफिशिएंसी. नाउ देर आर लॉट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया. दे स्पॉइल लॉट ऑफ फूड. एवरी ईयर दे कॉज द बोट्यूलिज्म डिजीज. बोट्यूलिज्म डिजीज अकर्स इन केन्ड फूड. जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर होता है. Here I would like to share that in case of infants, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम बॉटल फीड कराते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि either don't go for the bottle feed, otherwise please ensure that bottle should be boiled properly. It should be sterilized properly. It should be free from the bacteria or virus, so we can protect the child from the bacterial infection. They cause certain disease like in plants, they cause disease in animals also. Like in plants, they cause black rot in cabbage. Cabbage की सारी leaves खराब हो जाती हैं. They cause canker in citrus fruit. Citrus fruit के अंदर इस तरीके से holes हो जाते हैं और इसका pulp खराब हो जाता है, smelly हो जाता है. Ring disease of potato. In potato, there is a deposition of black color starch or some other chemicals, and they are generally arranged in a form of a ring. And the fire blight of apple and pear, जिसमें पूरे एप्पल के ऊपर छोटे छोटे जैसे जलने के बाद छाले हो जाते हैं, वैसे वैसे छाले टाइप के हो जाते हैं. Now there are lot many disease caused by the bacteria in human being also, like cholera disease. कॉलेरा में हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है. इट इज़ ड्यू टू विब्रियो कॉलेरी. ड्यूरिंग कॉलेरा we have lot of loose motions, we have lot of vomiting. क्योंकि सारा पानी बॉडी का लूज मोशन और वोमिटिंग से निकल रहा है, यूरिनेशन का रेट बहुत कम हो जाता है. क्योंकि यूरिनेशन का रेट बहुत कम हो जाता है, इसलिए हमको हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक एक्यूमुलेशन समटाइम वी मे हैव अ डेथ. डायरिया में लूज मोशन एंड डिहाइड्रेशन होता है. Pneumonia is a disease which is caused by Diplococcus pneumoniae. Name of the causative agent, if you could learn, it's good. If you could not, I can't say. याद करेंगे तो बेहतर ही रहेगा. ठीक है. एंड निमोनिया के अंदर हमको खांसी होती है, चेस्ट पेन होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है. डिप्थीरिया में हमें ड्राई कफ होता है, हुपिंग कफ, बहुत ज़्यादा ड्राई कफ होता है और बहुत इसे ना खांसने में आवाज़ आती है. ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है इस डिजीज़ को. एंथ्रैक्स होता है. टेटनस उन लोगों में होता है दोज हु आर वर्किंग इन सॉइल और जो काउ डंग या हॉर्स डंग के साथ में काम करते हैं. प्लेग इज़ डिजीज़ विच स्प्रेड थ्रू द रैट, बट बहुत एक टाइम पर इट वॉज अ पेंडेमिक डिजीज़ वंस अपॉन अ टाइम. देर आर सर्टेन डिजीज़, लेप्रोसी हो जाता है, टाइफॉइड हो जाता है. सो देर आर लॉट मेनी डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. Now there are certain bacteria which are used as a bioweapons. Now what is bioweapons? Bioweapons or biological weapons are living organism like bacteria, fungi, virus, and they reproduce within their host victim. ये किसी के अंदर grow करते हैं. Biological weapons generally toxic होते हैं and they can affect
plants, they can affect animals, they can affect human beings also. Biological weapons may be used to target living organism as well as non-living organism. They infect the air, water and then they affect us. हमें नुकसान पहुंचाते हैं. आई कैंट कोट एग्जैक्टली बट जैसा लोग न्यूज़ के में आता रहता है उसके हिसाब से यदि मैं बोलूँ, सो दैट कोरोना वायरस ऑल्सो एक्ट एज अ बायो वेपन्स. कहाँ से आ गया? उसने हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर दिया है. इट हैज़ सबमर्ज्ड इन आवर एयर, वाटर एंड लैंड, और हमें वहाँ से ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है. बट दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. ऐसा नहीं है कि कोरोना कोई का वायरस कोई बायो वेपन्स ही है करके. इट्स नॉट प्रूव्ड येट, बट हाँ, देर आर लॉट ऑफ बायो वेपन्स विच आर मिक्सड विद वाटर रिसोर्सेज, ताकि उस वाटर रिसोर्सेज की सप्लाई के थ्रू उस पूरे देश में या शहर में लोगों को नुकसान हो, जो लोग ऐसा नुकसान करना चाहते हैं. Now, how we can protect food from the bacteria? Because already we have discussed that there are lot of food spoilers due to bacteria. Use of extreme low temperature. बहुत लो टेम्परेचर पर, फ्रीजिंग टेम्परेचर पर बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन नॉट ग्रो. इसलिए आपने इफ़ यू वांट टू स्टोर पीस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ़ यू वांट टू स्टोर आइसक्रीम फॉर अ लॉन्ग टाइम, you can store it in a freezer. It will not spoil at all. But if it is in the refrigerator in a normal condition, it can spoil. At very high temperature, the boiling of water kills the bacteria, but not their spores. तो हाई टेम्परेचर पे, लाइक जब हम खाना पकाते हैं प्रेशर कुकर में और उसमें, तो उससे भी बैक्टीरिया ख़त्म हो सकता है. Pasteurization is a technique which is a partial sterilization. It is done in case of milk. In this, first milk is heated at 60 degrees Celsius and then immediately cooled down after 30 minutes. By this process, we kill the bacteria and we save the milk from souring. Use of chemicals. There are certain chemicals like before that let's discuss dehydration. हम घर में चिप्स बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, हम वेजिटेबल्स को स्टोर करते हैं. तो फर्स्ट व्हाट वी डू, वी ड्राई देम इन अ सनलाइट, ताकि उनके अंदर से मॉइस्चर निकल जाए एंड वी कैन अवॉइड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई और एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वी यूज़ सर्टेन केमिकल्स लाइक बेंजोइक एसिड. आप एक काम करिएगा, आज स्क्वैश की बॉटल के ऊपर, सॉस, चटनी इनकी बॉटल के ऊपर, जस्ट चेक आउट व्हाट काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड. बट जनरली बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड आइटम्स. Okay, then use of concentrated solution. Before explanation of this use of concentrated solution, I would like to ask one thing, that what is the difference between the normal juice which we are drinking at our home और the real juice? दोनों में क्या difference है? Real juice गाढ़ा होता है, real juice ज़्यादा मीठा होता है. What is the difference between the sauce we take from the market and the tomato chutney which we prepare at our home? हमारी चटनी उतना कंसनट्रेटेड नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं. क्योंकि वो काफ़ी डाइल्यूट होती है. तो यदि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो. इन फैक्ट इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बैक्टीरिया स्टार्ट्स टू लूज ओन वाटर कंटेंट. अपनी बॉडी का वाटर लूज करता जाता है, जिससे उसका साइज रिड्यूस हो जाता है and eventually it can die. This process is called plasmolysis. Use of irradiation. Ultraviolet rays are used to sterilize air, school, banquet halls, hospital, and in this technique we spray certain kind of radiations or ultraviolet radiations to kill microorganisms. So this all I want to discuss in this video. In next video we are going to discuss about fungi. Till then, take care. Goodbye.